ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए चलें उसमें। আমি সেই জন্য কিন্তু আজকে প্রেসটা করছি। I have some national friends who are working at the national channel and national level media. Sometimes from PMO office and the HMO office, they are feeding you the one particular issue or one partisan mannered news to the media so that they can insult me like anything. And there is no option so that you can cross check and then you can give the news. Yesterday night, yesterday evening, we watched. There are so many political party प्रधानमंत्री और leaders. गृह मंत्री की तरफ से the central leaders, हमारे कुछ मित्र हैं जो the कि political नेशनल party मीडिया में leaders, काम करते हैं, ruling उनको resorted to फीड कर दिया politics जाता है और बगैर क्रॉस and चेक made किए मुझे unjust बदनाम किया जाता है। comments through tweets and statements against me to tarnish my image and image of the chief secretary and the government. मेरी छवि, चीफ सेक्रेटरी की छवि और गवर्नमेंट की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। It proper to bring all the issues before you so that justice is to be decided by the people of India. इसलिए मैं आपके सामने And आई हूँ by ताकि Bengal लोग न्याय people. कर सकें। Please let me tell you what was the issue. मैं बताती हूँ आपको From मामला the क्या था। beginning, it was the issue when we came to know only day before yesterday afternoon, late evening. Before that, you know that I announced my program for Sandeshkhali, Hingolganj, Sagar and Digha. कल मुझे बहुत देर से पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के साथ। इसके पहले मैं अपना कार्यक्रम बना The चुकी थी। next day, late evening, suddenly we have received information that PM wants to visit cyclone prone area, especially in Odisha, 3 spots, and Bengal he wants to land Kolaikunda airport. From there he will go to Delhi and there मुझे अचानक पता चला कि वो उड़ीसा और उसके बाद बंगाल में कोलाईकोंडा में लैंड करेंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। We were ready, though I have preoccupied programs, and that is also totally, it was cyclone affected programs, the areas, the disaster area affected areas to go. But और when I thought that मैं Prime राहत Minister के is काम में coming लगी to हुई give थी him साइक्लोन की respect, वजह से प्रभावित लोगों we के cut short our program. First we went to Hingolganj. देख रेख में Then उनके we कामों went में to लगी हुई थी। Sagar. Then even Sagar also, you should know it. Some people are saying that why Chief Minister didn't receive Prime Minister. There is no need that every time Prime Minister, Chief Minister is to receive. There are some political program also sometimes. But लोग कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने रिसीव क्यों नहीं किया। ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं You है। can ask the local reporters, the administration and ATC control. We have got the information that we have to wait 20 minutes there because Prime Minister helicopter will be landing there, and after we'll get the permission. Though they were aware that regarding our coming and going the time schedule, we asked permission from before. And when we got information that after 20 minutes, the start, take off. Then we waited on the road in front of helipad. And we waited 20 minutes for that reason. And even when we are on the sky, it may be for security reason, we don't mind for that, we don't have any objection. Then also we move about 10-15 minutes. हमको एटीसी ने बताया था कि 20 मिनट का वक्त लगेगा। हमने पहले सड़क पर इंतजार किया और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी हमारा, हो सकता है ये सुरक्षा कारणों से आवश्यक रहा हो, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिली। Reach there, we have seen that Prime Minister already reached there. जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि वो पहले ही पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। When Prime Minister already reached there, we have to go to Digha and we are coming from too far. It is only because of Prime Minister to give him respect. We thought it is our duty to meet and after cyclone to submit our report. साइक्लोन प्रभावित इलाकों के काम में लगी हुई मैं सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए मेरे रिस्पेक्ट का तकाजा ये कहता था। I told him to visit with me because he is the head of the administration
so that you can have a look whatever happened there. So when we reached there, then they said us, you sit in a room. We are sitting there. After 10-15 minutes, we asked that please allow us to meet Prime Minister 1 minute. Vivek Shohai, our Chief of Security Director, he asked SPG that please tell Prime Minister, convey this that CM wants to meet हम him. वहां पहुंच only गए थे, 1 प्रीमाइसेस minute में थे to और hand इंतजार over कर रहे थे। the हमने रिक्वेस्ट किया info और of तब the हमारे cyclone. सिक्योरिटी He इंचार्ज should ने not disturb. एसपीजी इंचार्ज से ये इल्तिजा Then की they said कि SPG, आप हमें मुलाकात करने दें। 1 hour का बाद बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा. तब हमें कहा गया कि 1 घंटे बाद Then बात also he कीजिए, अभी informed कुछ नहीं us, होगा। and we were sitting quietly. हम Then चुपचाप बैठे रहे। through somebody we came to know that they went to conference room. फिर हमें पता Then चला कि वो myself कॉन्फ्रेंस and रूम में चले Alapur, गए। we thought that instead of attending the meeting, it is better if we go to the conference room where meeting was held. They have shown some vacant मैंने और chair. चीफ सेक्रेटरी ने सोचा कि Maybe कॉन्फ्रेंस earlier, रूम में जाना maybe बेहतर होगा। After that, it's a fact that there was no need to sit there at that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list has been given where Honorable Governor, Central Minister I have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean. So पहले जो the मुलाकात थी वो BJP सीएम और parties- पीएम के बीच में थी, लेकिन बाद में And I am राज्यपाल, alone. केंद्रीय मंत्री वहां तक भी ठीक था, लेकिन फिर and the एमएलए, meeting is not PM, लीडर Prime ऑफ Minister, अपोजिशन Chief क्यों Minister. थे वहां? Then I thought that, okay, whatever it may be, ठीक है, Prime जो है Minister when he came landed रहने our दीजिए। jurisdiction of our state, so let us meet, or it is our courtesy, and it is constitutional. लेकिन क्योंकि हमारी संवैधानिक Permission जिम्मेदारी also. है So myself और along courtesy with का my तकाजा chief है। secretary, we entered the room with their permission. तो हम मिलते हैं, हम उनकी And परमिशन से there फिर we रूम said, में गए Look, Prime Minister, we have to go to Digha. और फिर हमने The कहा कि weather देखिए is प्राइम not मिनिस्टर, good. हमें दीघा जाना है, We are coming from too far. हम बहुत दूर We से have आए हैं। already visited the cyclone affected areas like Sandesh Khali, Hingalganj, Minakha, Harwa. साइक्लोन प्रभावित इलाकों का दौरा करके हम आए हैं और काम बाकी है अभी। We have visited, and after that it was very difficult to come to Kalaikunda. The weather was not. उन तमाम जगहों का दौरा करने के बाद कलाईकुंडा आना मुश्किल था। उसके बावजूद हम यहाँ आपसे मिलने आए। From Sagar to Kalaikunda, and from here we have to go to Digha. So if अब you यहाँ से don't हमको mind, दीघा sir, जाना है। we want to hand over you the briefing of the regarding cyclone. लेकिन and our प्रभावित project इलाकों का report जो दौरा किया, and उसकी whatever ब्रीफिंग we हम have आपको the हैंड ओवर report करते हैं। received till now, we want अभी to तक hand जो over to you. अपडेट That's है why वो we हम came आपको to देना meet you. चाहते हैं। Then I hand over it to Prime Minister. फिर हमने उसको प्राइम मिनिस्टर को दे And he दिया, has taken it. उन्होंने And लिया then I said, sir, with your kind permission, may I leave? और फिर Because, हमने कहा कि क्या आपकी weather आज्ञा is से अब not हम good, जा so सकते I have हैं? to go to Digha because we have the meeting is been fixed there. Because all the people, all the press people, you were aware that Digha there is an administrative review meeting. एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू Then मीटिंग with थी his दीघा में, permission we came. उनकी परमिशन के साथ Now बाद ही you tell us हम what गए। is our fault? अब इसमें हमारी क्या गलती है? Why we didn't enter the meeting? We didn't attend the meeting? The meeting was not what was decided earlier, PM CM meeting, it was not. जो पहले तय किया गया था The पीएम और revised सीएम की list मीटिंग I वो नहीं have था। with me. There itself said the honorable governor will be here, the ministers will be there, the opposition leaders will be there. Okay, look, I have no problem, but you tell me why 2 consecutive years you have not recognized the opposition political parties in Delhi Parliament under your guidance? If you have so free and fair. Number 2. ऑपोजिशन के लीडर्स को ऐसी ही तवज्जो Last week you went there. बाकी जगहों पर क्यों नहीं Why मिलती? you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. उड़ीसा में भी ऑपोजिशन के लीडर को नहीं बुलाया गया। मेरे स्टेट में आने के बाद आपने ऑपोजिशन के लीडर को बुलाया, Why? क्यों? Even when I took oath, within a minute governor gave the statement against a statement regarding law and order. I took oath, within a day they have sent central team to visit West Bengal. I took oath, within 48 hours they have sent National Human Rights Commission, National Women Commission to visit. After 72 hours they sent their political party leaders also, central ministers also to the area.
But you know, जब मैंने शपथ लिया तब राज्यपाल ने whatever लॉ एंड ऑर्डर को happens, लेकर कमेंट small किया, sporadic उसके some फौरन incident, बाद it's not in my केंद्रीय time. दल भेज दिया गया, it was then under the election उसके commission. बाद एनएचआरसी की टीम आई और फिर एक और दल आया। And when I took oath, 5th of May, after that, we didn't allow any incident to occur. जब से मैंने शपथ लिया उसके बाद हमने कोई घटना नहीं होने दी। You know how BJP party behaves, how they provoke the communalism, how they provoke the political, the fake video they use. बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। Lost FIR and so many cases regarding thousands of fake videos. What they have spreaded, that is not हजारों की Bengal संख्या videos. में नकली That is वीडियो someplace else. फैलाकर Very इसी एजेंडा को चलाने की interesting कोशिश की things, गई। sir. Totally planted. And now after the incident, after the meeting with Prime Minister, और अब with प्रधानमंत्री his से kind मुलाकात के permission, बाद I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, जब मैंने may I उनसे leave? 3 बार ये कहा कि Along with my आपकी secretary. आज्ञा Sir, से क्या मैं जा with सकती हूँ। your kind permission, may we leave? Sir, with your kind permission, may we leave? After that, we went to Digha and we convened meeting and all this. उसके बाद ही हम दीघा Now गए। you tell me, and today also I visited this aerial survey, this Nandigram, Khejuri, Holdia, part of Pantai, that from Nandigram. That there also my chief secretary accompanied me. But you tell me नंदीग्राम from के आसपास भी yesterday, मेरे चीफ सेक्रेटरी मेरे plan-wise, साथ थे। they have shown some vacant chair so that I didn't sit there. Why I'll sit there? I discussed the matter with you. There was no seat inside the Prime Minister wherever he was sitting. Only his seat was there and side seat was there for us. So what was the need to sit there? अब बैठने की क्या आवश्यकता थी जब हमारे लिए जगह ही नहीं थी और जब हमने ब्रीफ कर ही दिया who था। are not even entitled to attend the PM-CM's meeting. और जिन लोगों की वहाँ होने की जरूरत नहीं थी जब वो भी वहाँ थे, Violated the norms. नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया We गया। never. আমি মনে করি to respect the Bengal people, to respect the countrymen, to respect the Prime Minister and Home Minister. Even nowadays, Home Minister also call the meeting, the virtual. Prime Minister also call the virtual meeting. We attended every meeting. Do you think that if I don't attend one meeting, they will give a bad name and they will defend? Sometimes we have some other work also. होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों ही मीटिंग कॉल करते हैं, जब भी होता है हम जाते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं जा पाए तो बदनाम करने की कोशिश होती है। They are attending every meeting, from Prime Minister to Home Minister to Cabinet Secretary to Home Secretary to all. All the time, if they do the central job, when they will do the state job. अगर हम हर समय केंद्र की ही सुनते रहेंगे तो हम अपने राज्य का काम कब करेंगे? For central, we trust Cabinet Secretary. He used to do the central job. The Home Secretary, they used to do the central job. For state, we have the Chief Secretary. He is the head of the administration. He leads the administration and my Home Secretary and my Finance Secretary and all. Don't you think after the meeting, it's a political vendetta that I thought since you are touching the land of Bengal, we reached Kalaikunda in time in the interest of the state. And for state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal, that also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. मुझे ह्यूमिलिएट ना किया जाए, Like this. इस तरीके से मेरी बेइज्जती ना की जाए। About Bengal, without knowing the case, one-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house, and you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. Not at all. मैनिपुलेटेड जानकारी दी जा रही है और उसको बताने के लिए कहा जा रहा है। This is in the case, one-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house, and you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. Not at all. I have a respect for Prime Minister, I have a respect for Home Minister, I have a respect for other also. This is a courtesy. Constitution protocol we all बंगाल में चुनावी नतीजे हजम नहीं हो रहे, इसलिए ये सब हो रहा है। Why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one you started this type of actioning.
Every time you are going for confrontation. हर What समय happened? टकराव की मुद्रा When में I रहते went to हैं। Netaji Subhash ये Chandra पॉलिटिकल Bose's वेंडेटा program, है, राजनीतिक what विद्वेष happened? है। You people have noted everything. I don't have anything to say. You have seen everywhere. That meeting also for COVID meeting. You called us. You didn't allow us to speak. Now you tell me, every time we are cooperating you, हर समय but हम you सहयोग people are करते not हैं, cooperating us. लेकिन आप Instead सहयोग of नहीं करते। cooperation, now उसके बजाय when I was in Digha, जब मैं and दीघा we में are थी busy our meeting with Digha regarding devastation and cyclone, और जब मेरी वहाँ पे cyclone मीटिंग affected थी, area, then suddenly सडनली it's very अचानक shocking to receive a letter from the government of India in the evening एक लेटर मिला regarding requisitioning of services of the Chief Secretary West Bengal by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि रिलीव किया That जाए the चीफ interest of सेक्रेटरी को। Bengal, I can go to any extent. That is why I had visited Kalaikunda by readjusting my program. I will do all these things in future also for the sake of Bengal. However, it must be kept in mind that the head of the elected government should get its due recognition and honor. We must get our respect and our honor. चुनी हुई सरकार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। He was working with me. That's obvious. Chief Secretary is a state government officer. Maybe they are central pools. From central pools they come. चीफ But सेक्रेटरी you know, after Sarkaria Commission and other commission, स्टेट गवर्नमेंट का they होता are है। the state government officers. ये ठीक है कि वो सेंट्रल पूल से आते हैं, They work for the state government fully. Now, head of the state administration. Now, Chief Secretary. हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का प्रशासनिक मुखिया, That we want requisition in Delhi. He should have joined. उनके बारे में आप अचानक ये फरमान सुनाते हैं कि वो वहाँ से रिलीव किए जाएं, वो दिल्ली ज्वाइन करेंगे। 3 months he has got extension. That also, I gave my letter. You see, this is my letter, 10th of May. That because of COVID situation and because of this year and cyclone, to give more attention for the devastation, for reconstruction, for relief work, to help the COVID people, to fight the pandemic, we want that all secretary, he should get 3 months extension. And it is already, the system is there. 10 मई को मैंने सेवा में विस्तार के लिए पहले ही रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। Prime Minister, they are kind enough, they have sanctioned this 3 months. They have given the letter dated 24th of May. After 15 days, I have received the reply that is 3 months extension has been granted approval through competent authority. और उसके बाद मुझे ये लेटर भी मिला कि एक्सटेंशन ग्रांट किया जाता है 3 महीने का। Last day of his final, not final retirement, he has got 3 months extension to work for COVID, to work for cyclone. Now he was saying that he should come back. Under which rule? और अब आप कह रहे हैं कि उनको यहाँ भेजा जाए दिल्ली वापस, Tell क्यों? me, within 74 hours, 4 years, have you ever seen this type of incident? क्या आपने कभी इस तरह की घटना पहले देखी है? You are not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretaries in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. Don't you think IAS, they have the lobby also? IPS, they have the lobby also? They are very much shocked. They are आपको नहीं very लगता much कि आप न सिर्फ shocked मेरी for बेइज्जती कर रहे हैं, बल्कि आप illegal, without consultation, सचिव की, मुख्य सचिव की, बल्कि बाकी राज्यों में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और आपको क्या ये लगता है कि हमारी लॉबी नहीं है IPS ऑफिसर्स में? हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। आपने क्या नहीं किया इलेक्शंस के दौरान? It is the blessings, it is the dua, it is the support of my young brothers, senior men, middle class men, the women voters
लेकिन लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से मैं जीती। अब लोगों के जनादेश का सम्मान कीजिए। What do you think? That you want to bulldoze the federal structure fully? Don't you think that it is good? It's fair enough? Every time if you bulldoze the state federal structure. आप सोचते हैं कि हमको बुलडोज करते रहेंगे? Yes, some place you have the government, but some place the opposition government is there. But for West Bengal there is a separate rule, martial law, and other place there is a different rule of law. Why? कहीं पर आपकी सरकार है, कहीं अपोजिशन की है, लेकिन बंगाल के लिए आपके नियम अलग हो जाते हैं। Every time. Even you don't give us our money. আমার অত্যন্ত দুঃখ লেগেছে এই কারণে যে मुझे इस बात का अत्यंत दुख है। আমাকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে, অসম্মানিত করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, টোটাল মিথ্যে খবরের উপর ভিত্তি করে, এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই খবরগুলো খাওয়ানো হয় এবং মিনিস্টারদের দিয়ে একই কথা তোতা পাখির বুলির মতো বলা হয়। আমরা করছিলাম সাইক্লোন ডিভাস্টিং এরিয়ায় কাজ, আমরা করছিলাম মিটিং কি করে মানুষ জল পায়, কি করে রাস্তা হয়, কি করে মানুষ খাদ্য পায়, কি করে ঘরবাড়ি তৈরি হয়, আর ওনারা তখন আমাদের বিরুদ্ধে আমরা কত খারাপ সেটা লোকের কাছে প্রমাণ করছিল। আমি আপনাদের কাছে নমস্কার করে বলবো প্রাইম মিনিস্টার স্যার, যদি আপনার এই রাগ, আমার উপর কোনো রাগ থাকে, আপনার দুটো পা ধরলে যদি আপনি খুশি হন, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাংলার জন্য আমি তাও করতে পারি, বাংলার জন্য আমি তাও করতে পারি, মানুষের জন্য আমি তাও করতে পারি, কারণ পাবলিক আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আই অ্যাম প্রো পিপল। আমার দেশের জন্য আমি এটুকু করতে পারি, কিন্তু প্লিজ প্রাইম মিনিস্টার দয়া করে এই নোংরা খেলা খেলবেন না। আর চিফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধে जो पॉलिटिकल वेंडेटा लेके आप रास्ते में निकले हैं, काइंडली ये मत कीजिए। अगर चाहिए तो मैं आपका पैर भी पकड़ लूंगा बंगाल के स्वार्थ के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा मत कीजिए। बंगाल के जो लोग हम यहाँ से रहते हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, हमारा संग दीजिए। क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? क्या ये होम मिनिस्टर का काम है? क्योंकि आलफन ममता बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।